أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum, dear participants. So time has come. We'll start for the session. We have 75 participants. I request Jafar sir to start the session. Assalamu alaikum, everyone. I hope you had a nice weekend. Weather also is very nice in Kuwait, alhamdulillah. So I hope you had a good time doing the homework. I was looking at the many entries. Many of you people have done good job, mashallah. So you have used whatever the knowledge we have covered so far. So that's a good thing. What we're gonna do is, since we have too many things to mm, learn, we will get into the action right away. Let me share the screen. Excel. Okay. And then we will. Okay. So today we're going to learn a few new things. I will refer the same, what do you call, automobile showroom data. What we're going to do is, let me format this in a way. Okay. So if this is like a showroom sales database, I will make it bold. Okay. So today we will see some of the factors like there is something which is very important to learn is called pivot table. So pivot table, if you remember our previous exercises, we did this exercise. For example, total car sold, total brand sold, salesman dashboard, all the stuff. So now I wanted to teach you people like how to write a formula, how to do things on your own. But now like Excel provides some way of doing it very easily also. So what we gonna do is we will see how we can use pivot table to further drill down into the table and fetch the data as we want according to our need. So I request everyone to focus on what we are learning today. When you go to the insert menu on the top, do you have insert? Let me annotate for people who are new. So when you go here, uh, this is insert. When you click here, immediately you will see something called pivot table. So pivot tables are nothing but a statistical tool which helps us to extract data as per our need. For example, I will show you an example for a better understanding. First of all, you click wherever you want to have the pivot table created. Now I will click here and then it is saying select the range of the table. So what I'm going to do, I will select the whole table. Then I press enter. So table has created and it's asking existing sheet you want to insert or a new sheet. I say existing worksheet, you insert the pivot table. So pivot table were inserted here in this area.
if you observe carefully, here we have one rectangular box which is our focal point. So as soon as you insert a pivot table, you will also observe that you received one additional pane. We call it as a pane. Right side pane come with the name pivot table fields. So now you will play with this area to generate your own required table. So for example, my requirement is I want to see salesman. I will put him in the row column. You just drag the salesman column and put it in the row area. See, I just dragged from here. I just dragged and put it here. Just drag and drop. So easily it happens. So I will drag car sold to the column. So, what is happening here now? Let me delete the. Okay. So, what is happening now? It created the pivot table created a column, I mean table with the salesman in the left side, that is row, and car sold in the right side. So now the value in the center, there is a value area. If you observe my screen, this box called value box. So this here you will drag the cost of the cost you will bring it. Okay. So it is saying the sum of the it is making automatically sum of the cost here. It is automatically making the sum. So now what happens is it is giving you each salesman how how much they sold and what is the grand total. For example, Aditya Mehta, he sold Corolla and the total sales he made is 8,000. Similarly, the Ananya Joshi, she sold only Camry and then she made so much. So now what you can do is the great part is, for example, I will bring the brand into the filter. So when you bring the brand into the filter, it created one more area here. If you observe, when I inserted the brand here, it created this area. If you see, it added another cell called brand here. What it does, it gives you a drop down box where you can further drill down your content. Now what I will see, I only want to see how is the Toyota performance in my showroom. See, I selected only Toyota. So what is happening? The all the data what you see about all the salesman is of the Toyota car. So Corolla, Camry, Prado, this is only the Toyota. If I want only I want to see how the Nissan brand is performing, I just go to the filter. I say, show me only the Nissan. It will say only two salesmen, Maya Kapoor and Rohan Singh, they sold Pathfinder and they made so much money. So this is a very useful tool for analyzing your data. As soon as you click here, again you will get this pivot table options at the right side. What you can also what you can do is here sum of the cost it is saying. Instead what you can do, double click field setting, right click and field setting. You can also say, I don't want sum, I want the total count of the things. So when it counts how many time this field has come, that will give you the
number of cars they have sold. Count, we already know, we did so many what do you call formulas for count if, sum if, and all. So count will give you how many number of times they have sold. So Aditya Mehta Corolla, he sold one. So if you go down, if you see, Maya Kapoor has sold two Land Cruisers. If you go down, Siddharth Verma has sold one Camry. So if you want to analyze data in this way, you can do it with the help of pivot table. And pivot table is like very dynamic. You can change, you can just drag and drop. Now I will remove salesman. So I will put again salesman back here. I will bring brands here, brand versus car sold. So now see, in the Maruti, Alto sold one. So in Nissan, it is only Pathfinder. In Toyota, so many cars, it is sold. So you can bring whichever thing you want to bring. For example, I will say I want to know um, brand wise calculation. So now it is showing the brand wise calculation of the these things. I will remove the column cars sold. I'll put it back and I will put cost here. So you will see um, here I will double right click setting. I will put a sum and I will put it back. Brand versus car sold, I will put it here, or you can put date also. So if you want to put date, you will see the date wise statistical data of the sales. For example, 6th 12th Toyota sold, and 8th 12 the Nissan car was sold. So date wise calculation of the things. So if you don't want date, you take and keep it here. You can put salesman here. So salesman on top and brand down. If you want to make vice versa, I will bring salesman here and brand here. So this gives more meaningful data. So this column is Maruti and this column is Nissan and this is Toyota. So individually you can dynamically, you can change, you can play around with your data and you analyze. So when you have this data, you can select all these uh, table, you can say insert, you can create a chart out of this thing. For example, I will go for bar chart. So when you see here, look at the chart, when you see, it is easily, you can tell that Maya Kapoor is the top salesman in this thing. And the the gray color is for Toyota and the orange color is for Nissan. So with this table, you are able to see the chart with the this performance, the performance by each salesman, how much they are performing. And by looking at this, the best performing brand is Toyota and the best performing salesman is Maya Kapoor, and then Aryan Patel, then Nisha Reddy, Priya Sharma. So this is the benefit of what you call pivot table. Pivot table is very easy and good way of analyzing the data. I will give 5 to 10 minutes now. Quickly do this exercise and show me how much you have understood about the pivot table. And share the screen. You do exactly like how I showed and share the screen in the WhatsApp group. Your your time starts. If somebody has doubts, you can ask. If somebody wants me to explain one more time, I'm ready.
जी अनस भाई, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, मैं बस ये चाह रहा था कि अगर आप इसको एक दफ़ा और बताएं, क्योंकि ये जो जैसा जैसा आप कर रहे हैं ऐसा हो तो रहा है मेरे साथ, हम्म। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा इसे कि किस तरीके से आप इस डेटा को ले रहे हैं। और हाँ। ये मतलब जो मैं जो चाह रहा हूँ उस तरीके से मैं किस तरीके से आप इस डेटा को ले रहे हैं, बस मैं ये समझ नहीं पा रहा। ओके, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी 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 अ, जी। ताकि पूरा ये ये हो जाए। अब देखिए, मैंने जो ऐड किया था वो डिलीट कर दिया। जी जी ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब पिवोट टेबल के बारे में मैं बोल दूं कि पिवोट टेबल, जब भी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, यहाँ पे तो सिर्फ 17 रोज हैं, लेकिन रियल जब एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे, शोरूम रहेगा, तो हर दिन 10 कार 15 कार अगर जब सेल होंगे, तो जी एक महीने में इजीली इट विल गो मोर देन 1000 रिकॉर्ड्स। सो इन दैट टाइम टू एनालाइज, अब मंथ एंड में जो समझिए कि एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसके अंडर में 10 सेल्समैन है। तो जब उसको देखना है कि उसके अंडर में जो सेल्समैन काम कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर आप 1000 रो का डेटा टेबल देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कितना जी। सेल किया है। तो बिल्कुल। इन इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा, उसको ड्रिल डाउन करके अगर डेटा देखना है, तब जाके आपको पिवोट टेबल काम आता है। पिवोट टेबल करता काम कैसा करता है, सबसे पहले आपको माउस पॉइंटर, आपको जहां पे पिवोट टेबल चाहिए इंसर्ट करना है वहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू जाएंगे। जब इंसर्ट, ये जो रिबन में अगर इंसर्ट डालेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो पिवोट टेबल है। पिवोट टेबल जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो वो पूछेगा कि आपको डेटा कौन सा कहाँ पर है। अगर आपके पास आप ये भी कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को, उसके बाद पिवोट टेबल को जाता हूँ, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करके बताएगा। उसके बाद आप, ये पूछ रहा है कि वर्कशीट नए शीट में डालना है, ये देखिए आप ये गौर से देखना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस वगैरह आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको पिवोट टेबल एक नए शीट में डालना है या इसी शीट में डालना है। ठीक है। तो मैं एग्जिस्टिंग शीट करके अगर जब बोलता हूँ, तो वो मैंने जहाँ पे माउस पॉइंटर क्लिक किया था वहाँ पे वो इंसर्ट करेगा। डेस्टिनेशन रेफरेंस नॉट वाले, ओके। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो वो यहाँ पे पिवोट टेबल इंसर्ट कर दिया। ओके, सो फार इट इज क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर देखना है कि हर सेल्समैन ने कौन से ब्रांड कितने सेल किए हैं, तो मुझे जो रो बनता है, रो में जो है सेल्समैन को लाना है। तो यहाँ पे अगर देखिए आप, पिवोट टेबल जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको एक राइट साइड ये बॉक्स आएगा। जैसे ही पिवोट टेबल ऐड होने के बाद, यहाँ पे आपको बहुत गौर से देखना है कि इसके अंदर जो डेटा को लाके यहाँ पे फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, वो रो बन जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पे कॉलम में आके डालेंगे, वो कॉलम, आपके छोटा वो जो टेबल जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं रो में क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेल्समैन जो है वो रो में आ जाए। देखिए, एक रो में सेल्समैन आ गया। और कार सोल्ड जो है वो कॉलम में आ जाए, तो मैंने कॉलम में खींच के यहाँ पे छोड़ दिया। सो कॉलम कॉलम में रो में जो है सेल्समैन का डेटा आ गया, कॉलम में जो है कार्स का डेटा आ गया। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा चाहिए ना, वो यहाँ पे है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, डिलीट कर, ओके, ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एरिया। वैल्यू आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो उसने सेल किया, कॉस्ट, वो वैल्यू में चाहिए। तो मैं जैसे ही क्लिक कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली पहचान के वो ले लिया के ये
कोरोला कितने सेल किए, आल्टो कितना सेल हुआ है, लैंड क्रूजर कितना सेल हुआ है, ये कॉस्ट वाइज आपको दे दिया। ये डेटा को आप फर्दर आप ड्रिल डाउन करके आप एनालाइज कर सकते हैं। इसको जब देखेंगे, मैं बॉर्डर दे देता हूँ इजी। हाँ, जब ये डेटा को देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये देखिए लास्ट कॉलम देखिए, ये देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। अब मैं अगर इसको, आप समझिए ये डेटा को आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल के अगेंस्ट में अगर मैं सॉर्ट करूं तो सबसे टॉप जो सेल्समैन है वो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना ये काम किया है। तो ये हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। आप एक और ऑप्शन है कि ये जो फिल्टर आपको नजर आ रहा है, ये एक और बॉक्स है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फिल्टर बॉक्स। ये फिल्टर का यूज क्या है? आप डेट, ये तो ये इतना बड़ा जो कंटेंट था वो ड्रिल डाउन होके इतना छोटा कंटेंट बन गया। इसको भी अगर आप चाहते हैं कि फर्दर ड्रिलिंग हो, तो आप जो ब्रांड जो है वो ब्रांड को लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रांड को जैसे ही यहाँ पे लाके डाला, तो ये एक यहाँ पे देखिए कि ये एक उसने जैसे ब्रांड को डाला तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स का काम क्या है? ये आपको अलो करता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके पास ब्रांड्स हैं, मैं सेलेक्ट ऑल को निकाल के सिर्फ टोयोटा करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास डेटा, ये जो पूरा डेटा जो है टोयोटा का ब्रांड का सेल्स हुआ है। तो मुझे आसानी से मैं देख सकता हूँ कि टोयोटा में कितना सेल हुआ है एट वन ग्लांस। आई कैन आई कैन सी हियर। ठीक है, इसी तरह मैं इसे क्लिक करके मुझे निसान में कितना सेल हुआ है वो देखना है। बस निसान में सिर्फ दो, एक ब्रांड पाथफाइंडर कार सेल हुआ है, दो सेल्समैनों ने सेल्स ये किए हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट यू कॉल pivot table wherein you can play with your data। यहाँ पे मैंने ये भी कहा कि जो वैल्यू है, वैल्यू का जो टेब इसमें है, यहाँ पे यू कैन डू लाइक एनी अदर फार्मूला। इसको राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग को अगर जाएंगे तो वो सबसे पहले तो वो सम कर रहा है, आपको काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं। मैं काउंट कर दे दिया तो इट विल टेल यू हाउ मेनी कार्स सोल्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ये करने के लिए, अगर मैं बोलूं कि कैमरी, हाँ आर्यन पटेल का नाम एक दो तीन जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पे माया कपूर है और आर्यन पटेल। देखिए आर्यन पटेल टोटल चार गाड़ियां सेल किए हैं। ये दिस डेटा विल बिकम वेरी डायनामिक। सो आर्यन पटेल हैज सोल्ड फोर कार्स एंड माया कपूर हैज सोल्ड फोर कार्स। तो ये जो है, इसको फर्दर ड्रिलिंग अगेन ऐसा भी हो सकता है, मुझे सिर्फ मारुति देखना है कि मारुति का सेल क्या चल रहा है, तो मैं सिर्फ मारुति सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ड्रिल में, और दिखाएगा कि सिर्फ मारुति का ये सेल है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पिवोट टेबल। So please start sharing. Mashallah, so many people have shared. Let me see one by one. Okay, column Pathfinder, total brand. Okay, Camry Corolla. Yes, very good. Dr. Hajira has done a good job. Somebody is getting error. Unnati Sumerian. The command request. I think the reference you are giving wrong reference. Sheikh Fatimun has done a good job, mashallah.
The chart also looking good. Uh, Anita Honda, it's good job. Shafaq has done good job. Let me go to gents section. Muhammad Khalid has done count of Toyota, the count and Camry. See, Khalid, you did not do any, you did not copy anything into the column section. You can put something in the column to analyze more. Al-Tamash has done good job. MashaAllah. Good. So hope you people got the uh, idea about the pivot table. Pivot table is very important, especially when you want to create dashboard kind of thing. This is very important. So you should remember about the concept of pivot table, why, where we can use it and why we should use it. And you can create multiple, more than one pivot table as needed. You can show car performance, you can show brand performance, you can show salesman performance, you can do all that stuff. Mariam Chako has done good job, mashallah. Anas Raza has done good job, very good. Okay. Farhan Ansar, good job. Yes. Good. Okay. So now we will move forward. There is somebody raising the hand. Yes. Rafia. अस्सलाम वालेकुम सर। Salam. सर आपने जो सिखाया अभी मतलब वो बार ग्राफ कॉलम चार्ट जो आपने बनाया पिवट टेबल का वो आप एक बार सिखा सकते हो? हाँ जी जी। देखिए ये जो है, मैं अब ब्रांड को टोयोटा बना देता हूँ। ओके। तो ये देखिए, ये मेरे पास पिवट टेबल रेडी है। इसको अगर आप सिर्फ टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट चार्ट करते हैं, चार्ट में बार चार्ट सेलेक्ट कर दिए और ये देखिए ये चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। आप इसको नीचे रख सकते हैं और इसमें देखिए कैमरी, ब्लू कलर जो है कैमरी है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है कैमरी है और लैंड क्रूजर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कैन इजीली टेल व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड्स। जी ओके। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। Okay, so let's move forward. Okay, sometime when you're entering the data now here, like assume somebody is Muhammad Naseem is asking, जी साहब अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वो वेलकम इसमें सलाम। पेपर टेबल में क्या हो रहा है ना सर, वो हम्म दूसरा कुछ सिलेक्शन नहीं आ रहा है, जैसे कार सोल्ड, डेट, ब्रांड, सेल्समैन, कॉस्ट, ये सब नहीं आ रहा है इसमें। वो सिर्फ एक ही आ रहा है, हम्म। सिर्फ मैं इसका शोरूम का आ रहा है कार में। नहीं देखिए, आपको है ना सबसे पहले तो टेबल सेलेक्ट करके उसको पिवट टेबल इंसर्ट करना है और वो राइट साइड इंसर्ट में किया है। कॉलम और रो में आपको डालना है चीजें। वो आपने रिपोर्ट कॉलम और रो फिल्टर में खींचा। कॉलम्स। जी जी। कॉलम देखिए, कॉलम में जो है सेल्समैन को खींच के डालिए और कॉलम। रो में जी सेल्समैन को डालिए। कॉलम के बॉक्स के अंदर ब्रांड्स को डालिए या कार सोल्ड को डालिए, तो आपको डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके ओके ओके। ट्राई करिए, आ जाना चाहिए। जी 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 ओके। ओके ओके। सो
मैं ये कर रहा था कि अगर समझिए कि आपके एक शोरूम में एक डेटा एंट्री पर्सन है, आप उसको ये डेटा एंट्री करने के लिए जैसे जैसे सेल होता है आप वो डेटा एंट्री करेगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर कभी कभी गलत नंबर ना डाल दे। अगर आप बोलना है कि यहाँ पे ये सेल में सिर्फ नंबर ही जाएगा, ऐसा आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप समझिए कि मैं एक एरिया सेलेक्ट किया, डेटा जब जाते हैं डेटा वैलिडेशन, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि डेटा वैलिडेशन में एक लिस्ट कैसा क्रिएट करते हैं, उसी तरह आप रूल्स भी सेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ नंबर डालना है तो एनी वैल्यू के जगह लेके होल नंबर करके आप डालेंगे, और होल नंबर दे देंगे, और ओके करके ये करिए। मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम एक रहे और मैक्सिमम मे बी 2000, ओके दे दिया। तो नाउ ये जो सेल के अंदर अगर आप टेक्स्ट डालेंगे तो वो नहीं लेगा, एरर देगा। तो यू आर प्रोटेक्टिंग द दिस प्लेस टू मेक श्योर दैट द पीपल कैन एंटर ओनली द नंबर्स। मैं 19 मारूंगा लेगा, लेकिन मैं डब्ल्यू अगर गलती से अगर मैं ये डाल दिया तो वो बिल्कुल आप वो नहीं लेगा। So this is one of the way where you can force people to enter the correct value. तो कॉस्ट है, कॉस्ट तो हाँ, कॉस्ट की जगह भी आप वो कंडीशन डाल सकते हैं कि वो सिर्फ वैल्यू ही डालना है, इसको वो करना ही करना है। डेट है, डेट के जगह पे आप एक कंडीशन ये डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे आपको कंडीशन डालना है वो आपको पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह आप डेट डालेंगे। और समझिए कि आप एक कोई भी एक चीज़ की बुकिंग का एक फॉर्म बना है, लोग वो सर्टन डेट के अंदर कोई भी एक दिन बुक करना चाह रहे हैं, स्लॉट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट या पीटीएम अपॉइंटमेंट कुछ भी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक स्पेसिफिक डेट आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टार्ट डेट कौन सा है, और उसके बाद एंड डेट एंड डेट भी जो है कोसा है वो डालना पड़ेगा। या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 11 11 20 24, ये रेफरेंस पूछेगा। तो यहाँ पे समझिए कि मैं स्टार्ट डेट 1/1/2024 डालता हूँ, और एंड डेट जो है 12/12/2024 में डाला हूँ। और यहाँ पे मैं आई वांट टू एनफोर्स के ओनली स्पेसिफिक डेट ही डाला जाए। तो डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह डेट, बिटवीन स्टार्ट डेट ये रहेगा, और एंड डेट जो है ये रहेगा। इसको ओके कर दिया, ओके करिए। अब यहाँ पे जब भी मैं डेट डालता हूँ, आई कैन नॉट पुट 1999, नहीं 1999, ओके, और कुछ डेटा वैलिडेशन एरर। मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन between this date, so this changes to all the cell with the same setting. Okay, now if I want, वो पैटर्न भी वो देखेगा। I will give 20। देखिए, now it will give the error that you are enter the wrong data. So if you put within like
correct date, for example, 10, 10, 10, 2024, ये ले लेगा. So you can enforce such data validation, like अगर आप चाहिए cars sold है, salesman है, salesman के data आप पहले select कर लीजिए. And if you want to enforce people, के only they should put uh, what you call text लेंथ ही ये करना है, मिनिमम 1 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक वो ये कर सकते हैं. देन इट विल टेक द टेक्स्ट वैल्यू. So similar way you can do the enforcing of the data, so that like the data entry becomes very easy and helpful. So this is like an example of data validation. Hope it is clear, and it's very simple formula as well. So okay, now let's learn one more concept called slicer. When you go to insert, there is something called uh, data. First, I will convert this as a table. Okay, I need to define this table first. Define name. I will give the table and insert. I will create a new sheet. I will copy this data. Serial number, car name, date, brand, salesman. This one I will home. I will make this like this. Okay. I will select this. I will convert this as a, see, you need to define this as a table. So if you type Control T, it will create a table, and you can give a table name also. So for now, let it be table 3. Header color, I will give it as red color. Okay. So now when I go to insert, you will get an option called slicer. See this one. But before that, in order to get this slicer, what you need to do, first you have to define your table. When you define the table, then only the slicer option will work. So, what this slicer will do, if you click, first you have to select uh, this one, what you want, then you say okay. So it creates small boxes. So this is like a very beautiful way of analyzing the data. Assume I will increase the data here. I will copy
more data, more data. Okay. So now, when if you see salesman, if you want to see only Aditya Mehta performance, just click Aditya Mehta and automatically your table do the filtering thing. This is only the Aditya Mehta. And if you see Ananta Joshi and clear this one, you have full data. Lot of, if I put a proper 68 rows are there data. Now, if I want to see how is the Land Cruiser performance, I just click this Land Cruiser slicer option. It shows only the Land Cruiser data. So with this, you can analyze the data very easily. I select Land Cruiser and Camry. So this is the Land Cruiser and Camry data. I select only Alto. This is Alto performance. I select Prado, Prado performance. So with the help of slicer, you can easily drill down your data into required content. This is like slicer are like generally used when you create a dashboard, no? If you want to analyze the data based on the particular thing. So then this is a fantastic way of using the slicer. Yeah. So that is the use of the option called slicer. It gives you more control over the analytical features. You can drill down your data based on the like brands, date, salesman, anything, whatever the column you have, you can drill down. Assume we made one time the home expenses. I think, let me see if we have the expenses table. Yeah. No, we don't have. Assume, imagine you have a home expenses table and you have this slicer. So what you can do, if you want to see how much your money you are spending on entertainment, let's do it so that like you will be in a better position to analyze the content. Assume that this is my home expense table. I put serial number, expense detail, uh, cost, when did you spend, and you can have some. Okay, somebody wants to ask something. Yes, Miss Surbi Jain. Yes, sir. So good evening, sir. Good evening. Yeah, sir, I want to ask then for each and every sheet because it's not necessary that every time we are having all the data on only on one sheet. If you want, like if I am having the data for three sheets, so should I prepare this pivot table for each sheet separately, or one pivot table on one sheet can work for two, three sheets also, or more than that? See, pivot table basically it works per table. One pivot table for one table. Okay. One So sheet, right? yeah, one table. You can have multiple table in one sheet, no? Okay. So So for it each one, I have to make like we have to make one pivot table yes, for yes, yes, each table, right? yes. And Oh, depending on your selection, sometime pivot table becomes big, sometimes small, based on how you select the rows and columns. Okay.
Okay, but okay, for each table it will be okay. Yeah, Yeah. per table, one pivot, per pivot table, one table you have to select. It needs some kind of data. Okay. Thank you, sir. You're welcome. So now we are we are trying to understand what is the use of slicer. So I am trying to explain with another example. Assume that this is home expenses. Now you get this is, I will insert one more column here called category. So your expenses are categorized into several this thing, basic need, and if you have a disconnection, it is called entertainment. And then you have car loan, that's luxury for us. And then you have grocery, that is that goes in basic need. Kids fee, that is also basic. And then you have dinner, weekend dinner, so that is it goes to luxury. And then you went to tour, then that also it goes to luxury. So here I'll put random cost, I will put. So similarly, uh, transportation, that is called basic need. And then you shopping you did, that is, it depends on what you shop. And then mm, you went to watch a football game, that is also entertainment. So now let's analyze the data here with the help of slicer. I said first you need to convert your table into, you should convert this into a table because you need to give a name to the table. So first step is to give a table, you have to press Control T. You can note down in your notebook. If you press Control T, you don't need to do anything, just press OK. It will convert the whole thing into a table. Now go to insert a slicer here. I want just category as a slicer. So it created a category. Now end of the month, when you spent all your money and you are wondering paise gaye kahan, so you come here. For example, if I select entertainment, it will tell you how much you spend on the entertainment. If you click basic need at home, this much you spent. Luxury, itna kharch kiya. So this way you can drill down your data into more precise value. So this will give you a good idea how things are happening in the data. So this is one of the way of analyzing the data. It's a slicer is an analytical tool used to uh, analyze the data in a more precise way. So hope you have understood the concept. I will delete this. I will delete this. And then I will try to sometime, like when you select your table, you must have seen uh,
a small tool will come here. I don't know, today it is not coming. Okay. We will also learn some of the very important factor, which is mostly it is uh, problematic when you want to print a particular Excel sheet. So we will see some of the important thing, like when you go to file and print, file menu, and then when you go to print a document. So generally, it will ask you what you want. You must have faced this issue in the offices. When you want to print something, the Excel sheet, the whole Excel table does not come in one paper. It will convert the table into like so many, like 3, 4 sheets, and it's very irritating. So for that purpose, what you need to do is, whenever you have a data to be printed, first thing you need to do is select the data. For example, if you want to print certain amount of data in a A4 sheet, select the data first, and then Control P. When this thing arrives, then you can tell that what to print. So print selection. See, uh, print what? If you select print selection, only the selected area will be printed in your document. And also sometime when your table is very big, so it will you need lot of space in the Excel, I mean paper. So what you can do, there is one more option down called narrow margin. So narrow margin, what it will do, it will start printing from a very narrow corner, and it reaches till the end of the page. Similarly, you can select if scale to fit, if I say, so it will automatically adjust everything. Page where page wide by page wide, 1 into 1, then it will automatically arranges. You can also select portrait mode, landscape mode if the data is very long. If you have a lot of columns, then you want to show all of the columns in one thing, then the orientation you can make it as landscape. If you want portrait with only selected one, you can do this. And sometime, assume you have this many data, you can press Control P, then yeah, entire workbook. If you select entire book, it will try to print, see, 1 of 37. It will create 37 pages of this Excel sheet. It will print the whole thing. If you select active sheet, then it will print only the active content what is there in the Excel. If you, it is always advised to do the selection what you want to, because the Excel sheet is very big. It will print everything. Wherever it sees content, it will print. So that's why the best option is to first you do the selection of the content what you want to print, and then Control P. You can, it will print only the particular thing. Here, two important thing: selection option, and then the narrow margin. If you say narrow margin, you will get lot of data to convert it. And also you can convert your this thing data into a PDF file. Save as PDF option will arrive here. If you select this save as PDF, it converts your data into a PDF file. So that is about how to manage the printing options. Sometime you need to, for example, assume that you have a very big data. This sheet I will show you. We converted lot.
sheet. Okay. Assume this is like a very long data. You want to print this, and in every page, you want to show a particular image. For example, last time we saw in the here, if you want to put a header or something, then what you need to do is you can go to insert menu, header and footer. There is an option called header and footer here. What it does, when you want to print a large amount of data, you can go here, and this area, anything you put here, um, car showroom data for the January 2024. So this date, this text will appear in all your table. Whenever you print something, this content will appear every time you print a particular page. If the content has like 50 page, every 50 page, this will appear here. So this header and footer, header has three areas: left, center and right side. Sometime you can enter the date here. I will give um, Jan 1, 2024, and here you can go, you can give something else, and here you can say this is car showroom data. So you can increase the font, you can change this thing like this. So this is called uh, header. Similarly, you can mention the footer as well, and it appears every time in the bottom. This is, if you go down, this is footer. So generally footer, you can insert anything, image, a short description, company website ID, automobile.com, and it will appear every time in the page. So this is about inserting a header and footer. And there are some features like you can insert image from a file. You can bring something, for example, images. See this image. Yeah, you, I will do like this, and then insert picture, uh, place in cell, place over the cell. You can, if you want to place anywhere in the document, just click uh, from the file, and then, yeah. So this image came, you can increase, decrease, you can do, and when you take a printout, it will come as it is. So this is how you insert a particular picture to your Excel sheet. Similarly, you can insert like some shapes. If you want to give some kind of a rounded rectangle style here, and then inside this you want to type something, you can do that. So all your data will come inside this, and you can manage its alignment, you can increase font, you can change the color, you can do all the regular things as you want. So that's the inserting a thing. I will show you one interesting feature that is like useful sometime. Assume I will download. Let me share the screen. I want to see one table. So
Okay. This table, I will right click, I will save this picture. This is a picture. I will save this in desktop, table one. So I will go to my Zoom screen. I will share Excel page. Now you can go to insert either you can say from picture, I picture from file, I go to desktop, I select this data and say okay. It will take some time, and then see it created insert data. So now insert anyway. See, this data, I got it in a Excel format. That was in a picture format. I downloaded somewhere. Now I found it in a Excel sheet, constituency and the name, everything. So this is how, if you want to convert a picture into a table, that also you can do it with the help of Excel. This is also sometime you found a nice table, but you are very lazy to enter the data. Then you can convert the whole table into actual Excel table with the help of these. So that is how you can insert into these things. Also, we can create barcode for the scanning. Sometime in the shops, these things are very handy. For example, I will create a new sheet. Assume that you have a product table. The product name is equal to serial number, name, uh, the barcode. Barcode. So in order to use this barcode, you need to download a barcode special font comes. Let me show it to you. If you go to Google and type barcode font free download. If you go to DA font, it is called DA font. So this is a barcode font. Mm, the font name 3 of 9 font. 3 of 9 font download. So 3 of 9, it is called 3 of 9. So I will download this font. Usually it comes in a zip file. I double click. I will double click this to install the font. I will install the font. I hope you know how to use the how to install the font. So now let me come back to Excel. Where is my Excel? Okay. So here serial number 123 I gave. This is my product. Uh, if it is some car spare parts, tire, uh, tube, then screws, and then bolt. These things are there, and assume the barcode number for this is special code to identify
Then here, what you need to do is, you need to write a formula to use this special barcode. Equal to sign, in double quote, you open the bracket and close the double quote and put and sign, and then reference to this cell. Click here and again, and within double quote, close the bracket, press enter. So I will drag like this. And now the font, I will go here, I will select the barcode font which we have installed. Where is the font I need to search? It will show a sample of barcode here. Okay, let me install another font. Of new. It's already installed. Okay, I will close this. I will restart Excel again. Screen share, where is the Excel? Okay, here. Now I will select the visual model. Okay, I think it did not get installed. Okay, I will show this in the next class. But you from your PC, if you are using, this is a Mac laptop, maybe it's giving issue. If you are using a PC, follow the same step, and you can, when you change the font, automatically the barcode will come based on what you have selected. Okay, anyways, I will show this concept next time. Now we will try to take some questions. Like in this session, if you have any questions, you can ask Syed Badruddin. You can unmute and ask. सर ये Okay. जो स्लाइसर का है ना उसका Mm-hmm.
वो समझ में नहीं आया स्लाइसर का, एक बार फिर बताएंगे स्लाइसर का, क्योंकि वो ओ, अच्छा है काम के लिए। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए स्लाइसर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आप डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो आपका जो टेबल है उसको डिफाइन करना पड़ता है। टेबल सेलेक्ट करके कंट्रोल टी मारेंगे ना, तो वो टेबल डेफिनेशन हो जाता है। तो उसके बाद आप इंसर्ट जाएंगे तो स्लाइसर ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू करेगा। वरना अगर आप डिफाइन नहीं करे हैं तो ये एक्टिव नहीं रहेगा स्लाइसर ऑप्शन। सो व्हेन यू वांट टू एक्टिवेट स्लाइसर, यू नीड टू डिफाइन द टेबल। टेबल को डिफाइन कैसे करते हैं? टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये कलर ऑटोमेटिक आ जाता है, वो डिफाइन करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी, आपके टेबल कंप्यूटर में कीबोर्ड से कंट्रोल टी मारेंगे तो आपको वो आ जाएगा। नाउ क्लिक स्लाइसर। आप स्लाइसर में आप समझिए कि मैं कैटेगरी के साथ एनालाइज करना चाहता हूँ, तो कैटेगरी सेलेक्ट करके ओके करिए। तो एक स्लाइसर का एक छोटा सा डब्बा वो देगा। यहाँ पे आप आपका डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एंटरटेनमेंट अगर सेलेक्ट करूंगा तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में कितने बार आया है वो सिर्फ वो डेटा देगा। तो यहाँ पे आपको आसानी से यू नो व्हाट हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट। बेसिक क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ बेसिक का रो दिखाएगा। लग्जरी क्लिक करूंगा तो सिर्फ लग्जरी का डेटा दिखाएगा। इसी तरह आप डेटा को वैलिडेट एनालाइज कर सकते हैं स्लाइसर के थ्रू। ठीक है, स्लाइसर एक बहुत ही काम की चीज़ है, स्पेशली अगर कोई डैशबोर्ड बना रहा है, डैशबोर्ड में क्विकली मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना है, तो स्लाइसर राइट साइड में डाल के क्विक क्विक आप चेंज करते जाएंगे तो वो अपने आप ये हो जाएगा। दैट इज अबाउट स्लाइसर। जी मोहम्मद साहिब भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सिस्टर रफिया। सर आपने इमेज इंसर्ट की थी टेबल में, वो कैसे की थी आपने? टेबल के सेल के अंदर हाँ हाँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सेल को मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर इसके अंदर अगर आप एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो गो टू इंसर्ट। यहाँ पे वो पूछेगा कि प्लेस इन सेल और प्लेस ओवर द सेल। प्लेस हम्म। इन सेल देंगे तो वो इन सेल में ये करेगा। पिक्चर फ्रॉम फाइल, मैं अगर कोई भी एक पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट, ये पिक्चर यहाँ पे वो सेल के अंदर डाल देगा। हाँ जी जी। इसको आप इसको हटा नहीं सकते आप। अच्छा। अगर आपको ओवर डालना है तो इंसर्ट पिक्चर सेल, इंसर्ट सेल नहीं यूज करना है, पिक्चर ओवर द सेल फ्रॉम द फाइल। यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो ये देखिए ये कहा, इसको छोटा बड़ा करके कहीं पे भी रख सकते हैं आप। जी वो दो ऑप्शन है, इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, यू शुड नो इट। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। मोहम्मद साहिब भाई पूछिए। खड़े भी वहीं जगह नोच अनम्यूट करते हैं यानी नोच म्यूट करते हैं। ओके, और कोई सवाल नहीं है तो हम लोग ये करेंगे। मोस्टली वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक एक्सेल थिंग्स हियर। Those who want to those who have little bit of programming knowledge or technical knowledge, I can take two session to learn about macros and VBA programming.
that is inside the Excel. So maybe Asim Bhai will ask for a poll in the group to ask how many people are interested. Based on the interest, we will see whether to conduct that advanced thing or no. So far, these things are like basic must-know features in Excel. Especially today, we learned pivot table. All those things are very much needed. Hope you will do good practice. You watch the video after they post the link, and then you do all the pivot table thing and create a grocery table and use slicer there and show how you can use the slicer, pivot table, all that together in one assignment. Inshallah, you can post it like in 1 or 2 days. Inshallah. Thank you very much. Over to you, Asim Bhai. Thank you very much. Yeah, I'll conduct a poll, and only the participants who have technical knowledge and basic programming knowledge, only they should reply, because those macros things you won't be able to understand if you don't know programming things. Okay, that's it for today. We will upload the recording by tomorrow evening, inshallah. Okay, then I'll end the session here. Allah Hafiz. Bye.